The pressure volume work for an ideal gas can be calculated by using the expression W is equals to negative of integration V initial to V final P external dV. The work can also be calculated from the PV plot by using the area under the curve within the specified limits. So when an ideal gas is compressed reversibly or irreversibly from volume V initial to V final, you need to choose the correct option. Okay, so we need to find out whether the work done irreversible and work done reversible, are they equal or they are less than or greater than. So let's find that out. So basically reversible process क्या है बेटा? Reversible process के बारे में if I just talk about, so reversible process is a slow process. Reversible process क्या है? It's carried out slowly. ये एक slow process है. Fine. Thus energy required for the process is very small. Energy required for the process, energy required for the process, energy required for the process is very small. Clear है? Now if I just talk about for irreversible process, for irreversible process, so for irreversible process what do I have to say कि it is a sudden process. Irreversible process क्या है? ये एक sudden process है. It is a sudden process, thus the process utilizes a large amount of energy. Utilizes large amount of energy, large amount of energy, utilizes large amount of energy. So work can be depicted by the PV diagram. Okay. So the reversible process is a process carried out slowly so that the driving force जो है it is infinitesimally greater than the opposing force. So during the reversible reaction, the change in the parameter of the system takes place slowly. So energy lost during the work done by the system is very small. That is what I've written. Energy required for the process is very small. Okay. अगर मैं irreversible process के बारे में बात कर रही हूँ, that is a rapid and sudden reaction that is happening over here. So system changes from the initial stage to the final state without any intermediate stage. So energy dissipated during the change in the system is greater basically. Clear? Now, during the compression of the gas, what happens? The pressure of the system increases and the volume of the system decreases. So these parameters have opposite signs as before. So if I now just talk about the PV diagram for reversible process. So I'm just drawing the PV curve for reversible process. It's pressure over here, on the x-axis is volume, y-axis पे pressure है. So here it is. So if this is P1, V1, this is P2, V2 we are talking about. So herein you can have a look बच्चा कि area under the curve के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं. Work done is area under the curve. Work done is area under the curve. ठीक है, clear है ये वाली. So the energy utilized is small, thus the PV curve is deep. Okay, so it's basically PV diagram for reversible process, for reversible process. ठीक है, so energy utilized is small, energy required for the process is very small. ठीक है, इसीलिए PV कर्व जो है डीप है. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ PV कर्व डीप है यहाँ पर. क्लियर है? आई थिंक यू गॉट माई पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाट आई लिटरली वांट टू से. ठीक है ना, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन स्लो प्रोसेस है. ड्यूरिंग द रिवर्सिबल रिएक्शन द चेंज इन द पैरामीटर ऑफ द सिस्टम टेक्स प्लेस स्लोली सच दैट की जो एनर्जी लूज हुई है ड्यूरिंग द वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ वेरी स्मॉल. लेकिन अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करूं जो कि रैपिड और सडन है, सो सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज विदाउट एनी इंटरमीडिएट स्टेज. सो एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग द चेंज इन द सिस्टम इज ग्रेटर. क्लियर है ये वाली बात? एब्सोल्युटली राइट.
ओके, बट अगर मैं बात करती हूँ इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, जो कि एक सडन चेंज हो रहा है सिस्टम में फ्रॉम P1 टू P1 V1 टू P2 V2. सो इफ आई जस्ट प्लॉट द PV कर्व फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, सो यहाँ आप देखेंगे वाई एक्सिस पे मैंने प्रेशर लिया है एंड एक्स एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम लिया है. सो यहाँ सडन चेंज हो रहा है सिस्टम का फ्रॉम P1 V1 टू P2 V2. सो अगर ये P1 V1 है तो ये देखो सडन चेंज दिखा रही हूँ मैं आपको, P2 V2. इट्स द सडन चेंज दैट इज हैपनिंग इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, द सडन चेंज दैट इज हैपनिंग ओवर हेयर. कैन यू जस्ट हैव अ लुक? हाँ जी राखी मैम. एंड सिंस इट इज़ अ कंप्रेशन सो एरो ऐसे जाएगा, ध्यान देना. क्लियर है ये वाली बात? या सो द कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम विदाउट एनी इंटरमीडिएट स्टेट. इरिवर्सिबल में कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है. सो दिस इज PV diagram. This is PV diagram for irreversible process. Clear people? So if we calculate area under the curve, we can see that the area under the curve for reversible reaction, ये देखो area under the curve जो है, area under the curve, जो ये area under the curve मैं आपको दिखा रही हूँ. Okay, this is the area under the curve for reversible process. So this is area under the curve for reversible process, and here you can have a look कि area under the curve for reversible reaction is less than the area under the curve for irreversible reaction. Herein you can have a look. By the graphs only you can overcome with this particular fact thing. So what we can actually write कि work done in irreversible process is greater than the work done in reversible process. I hope you got the particular point. You noted down from the graph itself ना कि irreversible में work done ज़्यादा है in comparison to reversible process. That's all for this question.